The difference among the living organism in its structure, functions and habitat is called diversity. डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंसेस है स्ट्रक्चर के अंदर एंड फंक्शंस एंड हैबिटेट उसे बोलते हैं डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस है रीजन क्या है डाइवर्सिटी का द पावर ऑफ adaptability of organism in different environment it is genetic diversity and isolation मैक्सिमम मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट maximum diversity in terrestrial habitat tropical rainforest in aquatic habitat and coral reef idea of diversity का क्या idea है expected number of living organism that is 5 million according to the scientist के according रॉबर्ट में taxonomically known number of species कितनी 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन है 1.7 से 1.8 मिलियन में से एनिमल्स की क्या है 1.2 मिलियन से एंड प्लांट्स जो है वो 0.5 मिलियन है इंसेक्टा जो है 70% है एंड दैट इज 1.02 मिलियन मैक्सिमम स्पीशीज है और मैक्सिमम स्पीशीज एंजियोस्पर्म इन केस ऑफ प्लांट 0.25 मिलियन हो जाएगा एंड 56% 15,000 न्यू स्पीशीज डिस्कवर्ड है हर साल न्यू स्पीशीज डिस्कवर्ड होती है 15,000 टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या चीज है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट into smaller or larger groups on the basis of similarity and dissimilarity is called classification organism का arrangement into smaller and larger groups on the basis of किसके basis similarity similar and dissimilar उसे बोलते हैं classification हर ग्रुप जो है each group in the classification is called rank label and category क्लासिफिकेशंस के अंदर हर एक ग्रुप को बोलते हैं रैंक लेवल एंड कैटेगरी अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज अलग अलग कैटेगरीज का अरेंजमेंट लेवल और द रैंक आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लोस लिनस The modern taxonomic hierarchy includes the obligate categories and 7 obligate categories and 21 intermediate categories. Modern taxonomic categories के अंदर क्या क्या included है 7 तो obligate categories है and 21 intermediate categories 7 obligate categories क्या क्या चीज़ है किंगडम के बाद आता फाइलम को डिवीजन भी बोलते हैं फिर क्लास फिर ऑर्डर फिर फैमिली फिर जीनस फिर स्पीशीज द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज स्पीशीज बेसिक यूनिट क्या है टैक्सोनॉमिक हायरार्की का वो क्या है स्पीशीज है कैरेक्टर्स ऑफ मॉडर्न हायरार्की इन असेंडिंग ऑर्डर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ग्रेजुअली इंक्रीज इंडिविजुअल का नंबर धीरे धीरे बढ़ जाता है कॉमन कैरेक्टर्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस कॉमन कैरेक्टर जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज होता है कम होता है जनरल कैरेक्टर्स ग्रेजुअली इंक्रीज जनरली कैरेक्टर जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ जाता है स्पेसिफिसिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन का क्या प्रोसेस है बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स The species have more common character than the genus. Species के पास ज़्यादा common characters हैं as compared to genus. Solanum, that is solanum क्या चीज़ है? Genus है Nigrum, McCoy, Melangena, Brinjal, Tuberosum, Potato. ये 3 क्या है? Species है. Genus generally several species. Genus के पास several species होते हैं. That is a polytypic genus बोलते हैं. जीनस के पास बहुत सारे स्पीशीज होते हैं उसे बोलते हैं पॉलीटिपिक जीनस एग्जांपल सोलेनम जीनस हैव सिंगल स्पीशीज जीनस के पास अगर सिंगल स्पीशीज है उसे बोलते हैं मोनोटिपिक जीनस दैट इज होमो सैपियंस मैनी जीनस कंस्टिट्यूट बहुत सारे जीनस आपस में मिलकर फैमिली बनाते हैं सोलेनेसी क्या फैमिली उसके अंदर क्या सोलेनम पेटूनिया धतूरा ये सब क्या जीनस है
मैनी फैमिली कॉन्स्टिट्यूट अ ऑर्डर, बहुत सारी फैमिली आपस में मिलकर ऑर्डर भी बनाते हैं। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ये ऑर्डर है, इसके अंदर सोलेनासी एंड कन्वोलेसी आता है, ये क्या फैमिली है। टमेटो, मैन क्या है, कॉमन नेम है। फिर उसके बाद होमोसेपियंस बायोलॉजिकल नेम है, होमो जीनस, होमिनिटी फैमिली, प्राइमेटा ऑर्डर, मैमलिया क्लास, कॉर्डेटा फाइलम या डिफीजन एनिमल या किंगडम। टेक्सॉन क्या चीज आता है, टेक्सॉन, द साइंटिफिक टर्म फॉर द कैटेगरीज इज कॉल्ड टेक्सॉन। The scientific term for the categories is called a taxon. Taxon represent categories of different level. Taxon क्या represent करता है, अलग अलग लेवल्स के कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है। इंटरमीडिएट कैटेगरीज क्या हो जाती है, ये रिप्रेजेंट करता है, हम कैसे रिप्रेजेंट करता है, सब या फिर सुपर कैटेगरीज। सब कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, सबका smaller categories and super means larger. Tribe is the intermediate categories which is placed between a subfamily and genus. Tribe is the intermediate categories which is placed between subfamily and genus. Terms क्या है, division, class and order, family and species. Division, Eclos, class and order, Carlos Linnaeus, family and species, John Ray. The suffix and prefix used in different levels. Division ancient phyla, Graphita, class ancient Chlorophyll, Oxida, and A. Order ends with polyminerals. Family of ends with Solanaceae. Tribe ends with A. Phylum. Nomenclature की बात आती है. The process of naming of an organism is called nomenclature. किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग देना, नेमिंग का प्रोसेस उसे बोलते हैं नोमेनक्लेचर। दो सिस्टम है, वर्नाकुलर नेम एंड साइंटिफिक नेम। वर्नाकुलर नेम इज अ लोकल नेम। वर्नाकुलर नेम क्या है, वो लोकल नेम है बट साइंटिफिकली नॉट वैलिड, साइंटिफिकली वैलिड नहीं है। साइंटिफिक नेम इज साइंटिफिकली वैलिड, साइंटिफिक नेम है साइंटिफिकली वैलिड है। नेम इज अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इट इज टू टाइप्स, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, naming of organism, organism का naming is two Latin word, generic name and specific epithet. Specific epithet introduced by Carlos Linnaeus. And the book species Plantarum plants in the year 1753, Systema Nature, animals in the 1758, Solanum tuberosum, then potato, binomial nomenclature, naming of organism in three Latin words. Generic name, specific epithet, variety means plants, subspecies, animals. Introduced by Lamarck. Brassica, Olivacea, Capitata, cabbage, Brassica, cauliflower. Corvus, Splendus, crow. International Organization for Nomenclature. ICBN, International Code for Botanical Nomenclature, International Code for Zoological Nomenclature, International Code for Nomenclature of Cultivated Plants, International Code of Nomenclature of Plant Bacteria, International Code for Viral Nomenclature and Classification. ICBN. It is an international organization for naming the plant. It declared that species is a basic unit. स्पीशीज जो है वो बेसिक यूनिट होता है टेक्सोनोमिक कैटेगरी, टेक्सोनोमिक हायरार्की। रूल ऑफ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का रूल क्या है, दो नेम्स दे रखे हुए फॉर द सेम प्लांट, सेम ही प्लांट के दो नेम्स दे रखे हैं, देन फर्स्ट नेम जो है क्या वो वैलिड होगा एंड अदर आर कॉल्ड सिनोनिम्स। ठीक है, तो प्रायोरिटी का रूल है, अगर एक ही प्लांट का, सेम प्लांट का दो नेम्स दे रखे तो पहला नाम वैलिड है और दूसरा नाम सिनोनिम है। ठीक है, जैसे रेटस, तो रेटस, कैटला, कटला।
टोटोनिम क्या होता है? सेम नेम फॉर जीनस, जीनस एंड स्पीशीज का सेम नेम, दैट इज नाजा नाजा, नाजा ए एंड नाजा बी, किंग कोबरा बोलते हैं। इट इज ओनली वैलिड इन केस ऑफ जूलॉजी। ऑटोनिम क्या है? सेम फॉर स्पीशीज एंड सब स्पीशीज और variety. It is valid for both zoology and botany, corvus, plantness and splendens. Naming of plant. Rule to write scientific name. Generic name starts with a capital letter. Generic name जो है किससे start होता है? कैपिटल लेटर से। Specific epithet जो होता है starts होता है small letter से। Both are separately underlined when it is handwritten. दोनों को separately underline किया जाता है जब हाथों से लिखते हैं। It is printed in italics. Italics में print किया जाता है। The author always written in a abbreviated form. In Roman letter and never underlined. Species concept क्या है? Genetic concept. Individuals of the same species are genetically similar. It means the species must have same number of chromosomes. They must descend from the common ancestor. Biological species concept. It was given by Ernest Mayr. It is widely accepted species concept. Species are a group of morphologically similar individuals which are freely interpret in nature to produce fertile offspring, and it is reproductively isolated from the individual of other species. Example can the female donkey and female horse, the female donkey and male horse, the male tiger and female lion, lion का और टाइगर का क्या हो जाएगा? द फीमेल टाइगर प्लस मेल लायन। लिमिटेशंस क्या हो जाए? इट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है बिकॉज इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या चीज़ है? Different type of technique and procedure used for proper identification and classification of organism is called taxonomical aid. It includes, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम्स, टैक्सोनॉमिकल कीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रेफरेंस बुक। हर्बेरियम में क्या है? इट इज कॉल्ड एज क्विक रेफरल system of taxonomic aid. It is a storehouse of collected plants. Collected plant का storehouse बोला जाता है. Specimens which are dried, pressed and preserved on the herbarium sheet and arranged according to Bentham and her system of classification. International size of herbarium sheet 41 into 29 centimeters square or 16.5 into 11.5 inch square. The size of the label paper 7 into 12 centimeters square. Information given in the label paper: plate of collections, place of collections, date of collections, place of collections, the English name, vernacular name, botanical name, name of family, name of collector of plant. फंक्शन ऑफ हर्बेरियम, हर्बेरियम का क्या फंक्शन है? करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस ऑन taxonomy based on gross morphology. It gives the information about local and distant steps of herbarium preparation, collection, drawing, polishing by the help of 0.1% NC solution, mounting, space teaching and labeling and deposition. Example of important herbarium of Royal Botanical Garden. Royal Botanical Garden, Kew in England. It is a collection of around 60
lakhs for Central National Herbarium, Kolkata, around 20 lakh plant. Taxonomic keys क्या है? It is used for the identifications of different categories of plants and animals based on similarities and dissimilarities. Separate keys are prepared for identification of each category. It is based on analytical factors only. A pair of contrasting threads which are used is called as complete, and each thread of the couplet is called lead. Concept of taxonomic key was given by the John Ray. Botanical garden के बारे में, botanical garden special type of garden है, जिसके अंदर collection of living plant for study and reference. Plants are collected from other places. It is called as ex situ conservation. Each plant is labeled with the information. Important botanical garden क्या है? Main botanical garden which is largest in the world is called in Moscow, present in Moscow. Main botanical garden जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, जो कि मॉस्को में प्रेजेंट है. इंडियन बोटानिकल गार्डन वहाँ प्रेजेंट है, दैट इज कोलकाता हावड़ा विच इज लार्जेस्ट इन इंडिया. नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ के अंदर प्रेजेंट है. रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यों एंड इंग्लैंड में प्रेजेंट है. म्यूजियम के बारे में कलेक्शन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर प्रिजर्व फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनका कलेक्शन, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है स्टडी रेफरेंस के लिए. प्रिजर्वेटिव केमिकल कौन सा है? फॉर्मेलिन है, फॉर्मल्डिहाइड. लार्जर एनिमल्स आर स्टफ्ड and pressed and preserved. Example: National Museum of Natural History, NH in Delhi. Zoological Park, it is a place where जहाँ पे wild animals रखे जाते हैं. Natural environment which is enable us to learn about their food habitat के बारे में पढ़ते हैं. Behavior, it is a part of ex situ conservation. किसका पार्ट है? ex situ conservation का पार्ट है. National Zoological Park is Delhi. Reference book Flora, it gives the actual information of habitat and distribution of plant of given area. Gives the actual information of habitat, distribution of plant of given area. The flora of Delhi. Manuals क्या है? It gives the complete list. क्या रहता है? Complete list and distribution of plant found in an area. मोनोग्राफ क्या चीज़ है? मोनोग्राफ किसी एक टेक्सॉन का इंफॉर्मेशन लेना. इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ वन टेक्सॉन ओनली. कैटलॉग क्या है? अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ प्लांट स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया. अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ प्लांट स्पीशीज जो कि एरिया में मिलता है, फाउंड इन एन एरिया.